London opens, price starts to breathe. New York follows with heat underneath. Reading structure, steady and clean. ICT flow in every screen. Signal shift, momentum grows. Algorithm shows where it goes. VTrades, watch the charts ignite. Sniper entries hidden right. Funded profits rising bright. Building strength in every night. Follow flow, ignore the noise. Structured moves, intentional choice. Let the chart reveal the way. VTrades growing day by day. VTrades growing day by day. Institutional rhythm moves slow. Liquidity tells where price will go. Building accounts with patient plays. Consistency defines our day. Signal shift, momentum grows. Algorithm shows where it goes. Watch the charts ignite. Sniper entries hitting right. Funded profits rising bright. Building strength in every night. Follow flow, ignore the noise. Structured moves, intentional choice. Let the chart reveal the way. VTrades growing day by day. Trades growing day by day. Precise. Welcome to VTrades. Hello, क्या हाल हैं सबके? Hope everyone is doing good. And just like usual, we are looking at NQ and ES. NQ is around RTH closing price right now. So we'll be trading on 5 of our 25K funded accounts with Tradeify. These are select accounts. So I would like to be part of something like this if it tags me along.
तो हालांकि एनक्यू ने आरटीएच टच कर ली है एंड इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड दोज प्राइस पॉइंट्स बट बिकॉज ईएस अभी भी काफ़ी दूर है समवेयर अराउंड 15 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स आरटीएच सेटलमेंट सो दैट इज़ व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू कंटिन्यू हायर दूसरा अगर हम 15 मिनट में जाएं तो NQ is looking much more bullish than ES. So yeah, that is the narrative behind this trade. इधर फिल मिल जाना चाहिए था हमें. Maybe it will dip one more time inside this inversion fair value gap around 830. Need to exercise proper patience today. And risk management भी जो है वो काफ़ी tight रखनी है because we have only got like $480 on one account and around $500 on the other three. On this one, we were able to make back some of the loss yesterday. I'll wait for my entry here and stick with my stop loss. 830. Yeah, got filled. Okay, instant stop out. Looks like. Be surprising. Going to give it this much room. Alright, let's see. If you look at 5 minute, there is a small busy, so it should be respected bullishly, and I'm expecting it to trade inside this inefficiency from yesterday's PM session. Make higher highs for the day. We do have bearish SFD though. I missed that. I'm just looking at it now. So if you look at ES never took the London high while NQ did. Should have taken that into account. If you look at the hourly chart, I think it should continue higher. Although NQ did not retrace into these inefficiencies that much, but ES did. So, yeah. And that is post sweep of this liquidity. So I'll wait for the information here. If we get stopped out, we get stopped out, part of doing the business. Can't do much about it. Can we?
523.75. We have covered new day opening gap low from today. Going in one more contract there. Risking around $108 at the moment on this, which is a bit over leveraged. Expecting this to be inverted bullishly, both ES and NQ. Do we have a volume imbalance here? 574, 574, no volume imbalance. Right, let's see. Big slab, that is not good for us. Close was okay on NQ, but not very nice on ES. And ES should be the one showing us strength, to be honest. So that is a bit concerning for me. Looks like going to run for our stops, and we are offside on here if it closes bearishly.
this is how the daily chart is looking like. तो थोड़ी सी indecisiveness तो है, to be honest. Looks like it wants to correct on the daily chart now. So maybe we can see some slab. वीकली पे हमारे पास ये वॉल्यूम imbalance है on NQ, similar on ES as well. So maybe that might be the drawn liquidity for this week. Non-farm payroll week है, बट क्योंकि अभी तक तो हम ऑल टाइम हाइस पे ही है ना, तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग सम बुलिश सेंटिमेंट. That's a good push. He is pushing after taking that low again. This low. Seems strong. That is my terminus, this inefficiency. See if it gives us or not. NQ is retesting the RTH closing settlement, 4:14 p.m. closing price from yesterday. I don't want it to be spending much time in this inefficiency because it has used it previously. Yes, we should study this one already in this. So maybe this one. Yeah. You can see a slab on both the indexes after ES takes that high. So let's see. Right now the goal is to bring these accounts out of drawdown, because yesterday we lost like 50% of the capital on these accounts. So just wanna make it back as much as I can today. And I should not be focusing on that. I should rather be focused on sticking to my risk management and booking my profits at right price levels. We are 7 minutes away from macro. न्यूज़ भी चेक कर लेता हूँ.
लेबनान और इसराइल का ही चल रहा है इंटेंसली। उधर से तो कोई आवाज़ नहीं आई हुई, वॉशिंगटन से कोई ख़ास, लेकिन लग रहा है मुझे कुछ होने वाला है। लेट्स सी, होप एवरीवन इज सेफ। Good move on ES if it manages to close strongly above the midpoint of the inefficiency it is in. So still the 5-minute closed at RTH closing price on MNQ. Four minutes away from macro. Expecting it to make higher highs on both the indexes before open. Will book one in this inefficiency. If it allows me, obviously. Trail my stop a little bit. So now we are risking $96 under our risk management strategy, but still we could be going a little bit more stricter there because of the fact that we are in drawdown and really need to save these accounts. ES missed the retest of new week opening gap high there from this week by a tick, around 8 o'clock. This should be to trade inside this volume imbalance on ES, and for NQ as well, trade inside this suspension block. Should recover quickly if we are on side.
We've got this volume imbalance. ES should manage to close above it. कोई आ ही नहीं रहा यार, आजकल स्ट्रीम पे मज़ा ही नहीं आ रहा। खैर मैं भी 1-2 महीने के लिए गायब हो गया था, so can't really complain. खैर I'll be consistent here. Moving on. ES is trading lower from this inefficiency now. That is not too good, to be honest. Should close inside of it now. We are inside macro. 8:59:10 macro. Expecting at least the next 10 to 15 minutes to be bullish. Should give us our first partial at least. Booking somewhere around $65 there. He has still failed to close inside of it, although did manage to trade inside of it. That is not too good, to be honest. Had this volume imbalance on ES, but interesting. Not looking good at all on ES now. But it did something similar here as well, if you guys remember. Let's see. It wants to support this small VC on 5-minute again. But the reason is like one of the confluence of my trade is that ES should be trading higher towards its RTH closing price before it opens, and because NQ has already done that. So if they want to take a slab from here, it can be a good point.
to be honest. This inefficiency. If it stops me out from here, I'll have to wait for the opening bell. Five minutes and 9 o'clock. NQ seems to be losing this price point day before yesterday's high. क्या हाल है अहमद भाई? अस्सलाम अस्सलाम। अभी खाने बैठ रहे हो या खा के आ गए हो? अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा पुश आएगा for ES to trade inside this inefficiency one more time and then it might continue on dropping lower. We are 3 minutes away from new hourly candle open, 9 o'clock. और सही सही खा लो भाई, सुकून से खा लो। अकाउंट्स की क्या रिपोर्ट है? ये कल काफ़ी गलत ट्रेडिंग हुई मुझसे ना इन अकाउंट्स पे, तो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। एक पे तो यार सोचो आप, $17 से मैंने पूरा ड्रॉडाउन रिकवर किया है कल, और वो भी ड्रॉडाउन क्या $75 ऊपर बने हैं, लेकिन $180 तो वो ES पे फजूल के ट्रेड्स लेके जाया किए उसी रन से। पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लर्निंग एंड गेटिंग बेटर। हाँ यार वीक लग रही है, looks like going to stop us out. I've been using this inefficiency for quite a while now. One minute away from new hourly candle. Looks like it is going to stop us out before that opens. Can't do much about it.
We'll wait for the open if this stops me out, and look for initially look for RTH, consequent encroachment hit, if I can place myself in that run, and from there I might look for continuation lower. New early candle opens, pushes higher on ES, got slapped. Here we go. First stop out, $402. Left with $384 on one account and 414 on the other three, 897 on the leader account. आधा घंटा है ओपन में. Yes, holding it strongly. ये indicate कर रहा है मुझे कि it might be able to continue higher and respect this BC on close basis after taking this low. Let's see. We'll wait here patiently. पॉइंट नहीं है, वरना कल में और आज में क्या ही फर्क रहेगा ना. ये ट्रेड हमारा एक बनता था, ये हमने ले लिया. See, big slap. Maybe after sweeping this low, it might do a quick run for the consequent encroachment hit of the opening range gap. But let's see.
ऑलराइट, सो ये मैंने थोड़े से अपने मॉडिफाई किए नॉन नेगोशिएबल्स। Bring it to daily chart. Should be fine. Pushing higher now. 24 minutes away from open. क्या लगता है आज का अहमद भाई, अगर मार्केट एनालिसिस की है ऑलरेडी? वैसे अभी तक ये भी प्ले आउट हो ही रहा है, ये वाली बीसी, तो देखते हैं। हालांकि लगता नहीं है मुझे कि सस्टेन करेगी है। दिस लो शुड बी स्वेप्ट डाउन बिफोर मार्केट ओपन्स। Maybe we can look for something like this, a quick scalp. मिस हो गया। मसला नहीं है, हमारे मॉडल का तो हिस्सा नहीं है ना ये। And ES has swept that low. NQ is still holding it. ES might come for these lows instead. NQ sweeps that low. Big slab, that is good. Giving us a wider range to play for the opening range gap model. But do remember कि ये हमारी last try होगी opening range gap model के लिए, so do try to place yourself accordingly. Not to take this. Alright, going long again, opening range gap model. Expecting this to be respected bullishly. We are 21 minutes away from market open. ES has swept that low. I'm expecting that to be bullish SMT divergence.
Shouldn't be getting slapped from this inefficiency. Should be inverted bullishly on ES. Similarly on NQ as well. I'd rather study it like this. Looking good. Equal highs, inefficiency. RTH settlement is in premium as well. So let's see. Looks convincing. Maybe not. Two straight losses again. Let's see. Let's stick with my stock here. Still kind of holding this 1 minute BC that we marked out, and on ES it is holding this day before yesterday's high. 16 minutes away from opening bell. Not a nice close. Last candle on NQ.
I will try to book most of my position if it allows me before the market opens. आप लोगों को क्या लगता है भाई क्या करेगी market? How are you guys looking at market today? What are you guys trading? Not a nice close again. So by 9:20, I wanted to be trading somewhere around these areas and trying to invert it. On ES क्या पता वो इसमें से एक इंडेक्स को पहले इन्वर्ट कर लेना चाहिए दूसरी से with strength if we are on side obviously. ये 5 मिनट की भी बिसी है. अगर मैं आप लोगों को 5 मिनट में लेके जाऊं तो ये देखो आप लोग ये 230 235 ये 5 मिनट से भी should be inverted bullishly. Let's see. $30 away from opening bell now. ये इक्वल हाइज एटलीस्ट लेने चाहिए इसे. 5 मिनट की सीबी भी है यहाँ पे. मेरा जो टर्मिनस है वो ये है टू बी ऑनेस्ट एनक्यू पे, और ईएस पे आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू पुश हायर एंड फिल द गैप कंप्लीटली और ईदर कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट हेड. Right around break even level now. ES is not showing us that much of strength. NQ took that high, ES did not. Will reduce my risk. Alright, 12 minutes away from market open. Alright, good push higher. Seems like continuing. तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि 920 के अराउंड मैं चाहता हूँ कि एनक्यू पे एटलीस्ट ये यहाँ पे हों प्राइसेस. इट हैज़ गिवन अस दैट. सो 920 पे यहाँ पे ये हैं प्राइसेस. अब देखते हैं कि इसको ये इन्वर्ट करना चाहता है या इधर से स्लैप लेगा. We are around 11 minutes away from market open. I will actually book something here. Not really. Let's see.
इसको मैं 50 पॉइंट्स पे लेके जा रहा हूँ सो दैट इट यू नो covers our previous loss. नौ मिनट दूर हैं अब हम ओपन से। आ गया ब्रिज, इसका क्या मतलब हुआ भाई? क्या बोलते हैं अहमद भाई इस ट्रेड के बारे में, कैसा लग रहा है? अभी ये न्यू डे ओपनिंग गैप लो रीटेस्ट कर रहा है आज का। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू क्लोज इनसाइड दैट रेंज बुलिशली। आठ मिनट दूर हैं अब हम ओपन से, और ईएस ने इतना कुछ इन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की है इसे, तो शुड वी टेक वन ऑफ? भाई आपने लिखा है ना पिछले मैच में आ गया ब्रिज, ब्रिज के नासा। अरे ये क्या लिख रहे हो? ऑलराइट, गुड पुश। क्या फन कर रहे हो अपने ट्रेड के साथ अहमद भाई? फन करना छोड़ो यार, सीरियसली चीजें करो। गुड पुश। Oh my god, don't do that. Please, bro. This happens with me so much, man. Even yesterday, it even gave the fill price but on ES, but it never got fill. यहाँ पे हाई आया हमारे पास 4543 पे, and we were sitting at 543.25. I want to reduce my risk further. अगर ये इससे नीचे गिरता है तो मैं इधर पे एक सेल स्टॉप इधर ले लेता हूँ, रादर देन पूरा मूव मिस करूँ मैं। एटलीस्ट ये तो मिल जाए ना हमें। यार अहमद भाई क्या बात कर रहे हो? आप देखो ना 1048 वाला मैसेज। हाँ मैं लैपटॉप वाली स्क्रीन पे देखता हूँ ये चैट, लेकिन दिख रहा है यार। तो क्या बोल रहे हो यार, एपेक्स डिड नॉट पे मी फॉर माय डाटा, मतलब नहीं समझा मैं। कौन सा डाटा? आप तो वो यूज़ करते हो ना ये ट्रेडिंग व्यू, सॉरी। तो अच्छा, हाँ अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का वो प्रो वर्जन नहीं है तो नहीं होगा ना आपके पास डाटा। अच्छा यार, पता नहीं ब्रो, आप उसको रीच आउट करो सपोर्ट टीम को। हम्म, मैं उस पर लेता हूँ आरटीएच सेटलमेंट पे ना, दूसरा 556.25।
तो समवेयर अराउंड ब्रेक इवन आ गए हम। पिछला लॉस कवर हो गया है इस एक पार्शल से, और इधर समवेयर अराउंड $100 बुक हो जाएंगे। अभी गोल जो है वो प्रॉपरली रिस्क मैनेज करते हुए ड्रॉडाउन से निकलना है। अहमद भाई, उसको रीच आउट करो। आई एम प्रीटी श्योर दे विल बी वेरी हैप्पी टू फिक्स इट अप फॉर यू। लेकिन ऐसी इसमें ट्रेड करने की कोशिश नहीं करना। अगर हो ही नहीं रहा तो देन इट्स अ पॉजिटिव साइन, बट डोंट रश और स्ट्रेस थिंग्स। क्योंकि मेरे साथ जब भी ऐसा कुछ होता है कि ट्रेड कॉपियर नहीं चल रहा हो या कुछ, तो मैं बहुत बुरे मेंटल जोन में चले जाता हूँ, मेंटल और इमोशनल जोन में, एंड देन आई एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ अकाउंट्स ऑन दैट डे। खैर, 3 मिनट दूर हैं अब हम ओपन से। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और पार्शल उतार लूँ इन्हीं एरिया में, ताकि हम थोड़ा सा इस पे प्रॉफिट भी बुक कर सकें। अभी तक तो हमने सिर्फ पिछला लॉस कवर किया है, और वो भी पूरे तरीके से नहीं हुआ है। तो वही करूँगा कि यहाँ पे था ना मेरा स्टॉप पिछला, तो मैं यहाँ पे उतार लूँगा अराउंड 929, अगर ये वाला पार्शल मुझे नहीं देता वो ऊपर से। हाँ, बेस्ट हो गया। कौन सी मूवी देख रहे हो भाई? चलो, थैंक यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जो है वो मैं ओवरनाइट हाइस पे लगा दूंगा, ठीक है? एंड गोइंग ब्रेक इवन एज वेल, नो पॉइंट ऑफ लूजिंग एनीथिंग ऑन दिस एनीमोर। एक हैंडल दे देता हूँ। या ठीक है जी, played out well, booked some profit somewhere around $110, which will cover our losses from yesterday and make some buffer on the leader account. एक मिनट दूर है अब हम ओपन से, और एनक्यू पे तो 556.25 है आरटीएच सेटलमेंट, लेकिन ईएस पे जो है वो काफ़ी दूर है, somewhere around 20 points, and that was one of the reasons we took this trade. तो देखते हैं कि यहाँ से एनक्यू भी पुश करती है टूवर्ड्स ऑल टाइम हाइस, तो नहीं मतलब ओवरनाइट हाइस, या नहीं, क्योंकि मुझे एनक्यू ज़्यादा बुलिश लग रही है। एनक्यू नेवर टुक दी लंदन लोज वाइल ईएस did, तो हमारे पास एसएमटी डाइवर्जेंस भी है नीचे से, और समवेयर अराउंड 100 पॉइंट रन मिलेगा। ओके, मार्केट ओपन्स। Okay, big slap on NQ. Let's see. If it wants to respect our stop loss or not.
ES pushes higher, still needs to trade much higher to trade to consequent encroachment, which is the least it should do. Consequent encroachment on ESA is at 7607. To look at that price point. Okay, got stopped out there. Break even. Let's see अब हमें क्या मिलता है. ES is about to deliver the consequent encroachment और मुझे लग रहा है कि इसके बाद फिर NQ स्लैप कर सकती है. No, nothing on 15 second as well. यार साथ मूवी तो अच्छी नहीं पता कोई. अभी तक कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट नहीं आया है ये इस पे. लुक्स लाइक जो मुझे प्रीमियम एंट्री चाहिए थी वो तो नहीं मिलेगी. अराउंड 9:30 ओपन. तो 10% हमने कल का ड्रॉडाउन कवर किया है 4 अकाउंट्स में. And he takes that low. I'm thinking of longing from here. Longing NQ for a quick scalp for this eye. ES has still not delivered the consequent encroachment and taking a hit. It did deliver the 0.375 level
I think it is coming for the retest of 930 opening price. First present a fair value gap on NQ. And yes, it's here. I'm thinking of long here. Yep, I'm long. 53. Oh my god, I think I have risked a lot. That is not good. So take one off immediately. गलत trade. Emotional. Rushed into it for no good reason at all. $15. Oh man, risked a lot there. 170 or something dollars. That is not good at all. And it wasn't even needed. Alright, need to calm down. Take a step back. 1 minute, 1 minute. Look for more information. I think we are on side. It's just that it might need to trade a little much lower, or maybe that was just the stop run it had to do. ES is retesting 930 open price. डेली कैंडल ऐसी दिख रही है. नॉन फार्म पेरोल वीक है. ट्यूसडे है आज. क्या लगता है भाइयों? शो बता दूं यार. शो भी ऐसे अभी तो दिमाग में नहीं है. अभी तो सिर्फ यही चल रहा है. देखते हैं.
I'm going long again. Don't tell me I missed my fill there. I missed it. Maybe it might want to retest this inversion fair value gap on 30 seconds. Okay, but this inefficiency, this is what I'm doing. Buying this 15-second BC, hoping it won't stop me out. At least give me this. Looking good. Thank you. What this 1 minute first presented fair value gap, if you notice, very small one, but it can trade into that and stop us out. So that is what I'm looking at right now. I think this should be respected as the first presented fair value gap. Initially, bullishly. Nvidia pushes higher really strongly.
Thinking of taking it off this year. I'll take it off. Thank you very much. First presented fair value gap on ES. भाई अब सही लग रहा है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ आपके मैसेज अहमद भाई। सॉरी यार, काफी फोकस हो गया था, डायल इन होना पड़ा था। अभी मैं इस ट्रेड के मतलब इस पार्शियल अगर ये मुझे दे देता है ना 9:30 रीटेस्ट, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा डेस्क से भी उठूंगा। उठक बैठक करें, थोड़ा सा उठें, क्योंकि हार्ट बीट वगैरह काफी तेज हो रही थी। इन चीजों का काफी ख्याल रखा करो भाई। तो $100 प्रॉफिट में है अभी हम, और रिस्क अभी भी ऑन है हमारा। कितना? 1734, समवेयर अराउंड $68। तो अगर इधर से आके हमें स्टॉप आउट करता है ये, वी विल बी समवेयर अराउंड $20 इन प्रॉफिट। ये वापस आ रही है फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप में। मैं इससे नीचे, हाँ सही है। अब मैं एक वाले को राउंड वो मतलब राइट कर सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। हाँ यार, थोड़ी सी बहुत भारीपन सा है आज, मतलब ऑफिस पे भी जो दिन था बड़ा ही अजीब सा था। पता नहीं क्या ही हो रहा है, काफी अजीब सा है। Alright, further reducing my risk to the low of first presented fair value gap there। बल्कि ब्रेक ही भी नहीं जा रहा हूँ यार। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना भाई, मेरा तो फेस वो मतलब क्लाइंट फेसिंग काम है ना। हाँ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अराउंड। मैं उस दिन कहीं पढ़ भी रहा था, इस तरीके की चीज़ें हैं। इन पे मैं पहले बिलीव नहीं करता था, लेकिन सारा सीन एनर्जीज का ही है ब्रो, एट द एंड ऑफ द डे।
तो सही बोल रहे ब्रो, आज काफी मुश्किल दिन था फॉर नो रीजन एट ऑल। चले थोड़ा सा उठे आगे पीछे। बाकी डंबल वगैरह भी रख लो यार आगे ना, अपने ट्रेडिंग डेस्क के। भाई ट्रेडिंग डेस्क बनाई, सेटअप बनाया। बिल्कुल भाई, और एज अ मुस्लिम तो पता ही है आपको इन सारी चीज़ों का कितनी इम्पोर्टेंट है। Alright, looks like we were on site. भाई करो कुछ, मतलब अभी टाइम के लिए कोई सी भी चेयर लो, उस पे तकिया वकिया रख ले भाई आराम के लिए, लेकिन सेटअप बनाओ। बिस्तर पे लेटे लेटे काम नहीं होगा मेरे भाई। अहमद भाई, करना है ये या नहीं करना, पहली बात तो ये है ना, जब करना है तो फिर पूरे दिल से करो ना, पूरी नीयत से करो, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं है। आपने एक और चीज़ नोटिस की है ईएस और एनक्यू पे? अच्छा यहाँ पे सही है, मेरे एक चार्ट के लेआउट पे ई एनक्यू पे ईएस का लोगो आया हुआ है और ईएस पे एनक्यू का लोगो आया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, ट्रेडिंग व्यू बहुत अजीब हो गया है। अच्छा, ईएस ने अभी तक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट नहीं दी है और चमाट आया है, तो देखते हैं व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टेल अस। हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जा रहा है 10 बजे, जॉल्स जॉब ओपनिंग। 9:30 को ब्रीच कर रहा है। Was presented fair value gap. Don't want to take break even hit on this यार, मतलब I wanna book something, लेकिन मुझे पता है कि अराउंड 10 बजने से पहले ये आ सकता है इस रेंज में। देखते हैं। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि अगर ये मुझे ये दे देता है ना पार्शल, तो हमारा ऑलमोस्ट सारा कल का जो ड्रॉ डाउन लॉस है वो कवर हो जाएगा। डार्विन आ रहे हो भाई आप? क्या सीन है डार्विन का? भाई जॉब पकड़ के आना,
क्योंकि डार्विन जो है ना वो काफ़ी महंगा है मेलबर्न से, अगर आप कंपेयर करो तो उस चीज़ का ख्याल रखना कि इधर जो है ना, और जॉबें भी बहुत हैं, जॉबें मिल जाएंगी। आप बताना, मतलब अगर आप वो सिक्योरिटी वाले सीन करना है तो अपना लाइसेंस वो करवा लेना, कन्वर्ट करवा लेना। मैं आपको भेजता रहूँगा जॉबें, आप डालो वहाँ पे, सीवी पे मेरा रेफरेंस डाल देना। ये अच्छा मूव है, अगर ये 10 बजे से पहले ही दे दे तो हाँ पता आ जाएगा। हाँ उनसे बोलो आप आ गए हो ना, मतलब घर वर की सेटिंग कर लो और फिर आप बोलो कि आप आ गए हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। So up $460 on the leader and 480 on the followers. Have made back most of the loss from yesterday. अभी थोड़ा सा ऑफ साइड रहूँगा, सुकून करेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि मज़ीद ट्रेड लेने की ज़रूरत है या नहीं। डेली कैंडल चेक करो आप किस तरीके से एक्सपेंड करी है ऊपर की तरफ, आफ्टर ट्रैपिंग एवरीवन शॉर्ट है। मिडनाइट ओपन प्राइस, मिडनाइट ओपन रेंज, 1 बजे के भी प्राइस लेवल बहुत अच्छा होता है। तो देखते हैं अभी ये इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक एक्सपेंड करती है या नहीं। 629.75 और न्यूज़ के बाद हमें कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। यार घरों की ना बड़ी खड़की हुई हुई है अहमद भाई, क्या बताऊं मैं। क्योंकि मेरा, आपको पता है ना मैं क्या काम करता हूँ, तो उसमें हर किसी को बहुत मसला हुआ है। लोग इवन कैरवान देख रहे हैं भाई यहाँ पे, और मेरा ख्याल से ये ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया ही है। लेकिन क्योंकि अभी अभी वैसे मैं बोलूँ अहमद भाई अभी नहीं आना, ठीक है। वेट फॉर ड्राई वेट सीजन टू किक इन समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर। तब तक जो है अपनी ये सेविंग्स वगैरह भी कर लो और बाकी चीज़ें भी देख लो कि किस तरीके से करनी है यहाँ पे आके। अरे भैंस का मुंह, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ ड्राइवर को देखो क्या करवा रहे हैं। चेक कर रहे हो ना भाई प्राइस सेक्शन। इंटरेस्टिंग, ऊपर की तरफ ही एक्सपेंड करेगा, बुलिश लग रही हैं चीज़ें। तो ड्राई सीजन में तो भाई इधर घर मिलना ना लिटरली नियर टू इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल चीज़ है। और मसला पता है क्या है कि आप आके अगर वो करोगे ड्राई सीजन में लीज, तो आपको लीज भी महंगी मिलेगी और वो महंगी से ही इंक्रीमेंट होगा। जैसे हमारी सितंबर की लीज है तो हमारा वो भी सस्ता है और बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं कि हमें जब भी वो रिन्यू करेगा उसे पता है कि अगला आके नहीं उठाएगा फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 6 to 8 months। तो इस तरीके की सेटिंग बनाओ अभी, मतलब ड्राई सीजन में आने वाली गलती नहीं करना। किसी से भी बात कर लो आप ड्राइवर वाले से, वो आपको यही एडवाइस करेगा। अब 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन गई है। बाकी करते वीकेंड को कैचअप करते, बताना कॉल का। रिकैप करें भाइयों। सो इनिशियली वेंट लॉन्ग यहाँ से, गॉट स्टॉप्ड आउट, फिर वेंट लॉन्ग, took profits before the open and got break even, stopped out. They went long, got stopped out, went long, took decent profits, made back almost all of the losses from yesterday.
So now we are just waiting and looking for more information. अगर ये और deeper retracement करता है तो I might tag along या maybe इसकी consequent encroachment से, but that might be a little, greedy to be honest. तो मैं वेट करूँगा यहाँ से. भाई वो पूरा मैसेज ही आपका चेंज कर देता है. उसने लिख दिया उस्ताद इज अ गुड टीचर मेरे सामने. और बेहतरीन जा रहा है यूट्यूब पे. यही बोलूँ ये कभी कभी आपके मैसेज में कैसे आ रहे हैं तो वो फिर अब मुझे ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा. कसम से ब्रो मैं आपको अपनी चैट भेजूँ ना आप हंस हंस के मर जाओगे. लिटरली मुझे इस मैसेज के ऊपर जाना पड़ रहा है टू एक्चुअली रीड व्हाट यू आर सेइंग. और कुछ जो थोड़े से ज़्यादा ऑफेंसिव हैं उसमें वो मुझे पहले दिखा रहा है शो या हाइट का. हाँ ना तभी तो मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही कि आपको बोलना क्या चाह रहे हो. So it's continuing higher from 0.375. Takes the higher on yes. हाँ तो कितने ट्रेड हुए 1 2 3 4 ट्रेड्स हुए हैं अभी तक विच इज़ नॉट बैड. मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी मैक्स लिमिट जो है ना वो 5 ट्रेड्स पे लगाऊं. इस तरीके से मैंने ये भी बनाया कि 3 स्ट्रेट लॉसेस दे क्लोज मस्ट नॉट बी open more than $100 on risk at any time. A daily loss limit 450. No trades outside 8:30 to 11:30. Opening range model के पास 2 ट्राइज हैं. सिल्वर बुलेट 2 ट्राइज. लंच प्रोफाइल 1 ट्राई. तो इसकी वजह से नहीं मतलब ओवरऑल क्योंकि मैं अपना हर वीकेंड पे पूरा सारे दिन रिव्यू कर रहा हूँ सारे सेशन रिव्यू कर रहा हूँ और जर्नल कर रहा हूँ. तो अगर मैं इससे ज़्यादा ट्रेड्स दूंगा इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट इट डन इन वन डे. और सिर्फ मेरे पास उतना ही टाइम है तो इसलिए कम से कम ट्रेड्स देंगे. कल काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ट्रेड्स ऑलरेडी तो ऑलरेडी इस पे कैचअप करना है. लेकिन आज की एग्जीक्यूशन से आई एम प्रीटी मच हैप्पी टू बी ऑनेस्ट. सही तरीके से रिव्यू जब करूँगा देन वी विल गेट टू नो in more detail, but abhi tak I'm pretty happy. So it is approaching the consequent encroachment of yesterday's premium wick.
सच बताऊं ना, मेरा दिल तो बोल रहा है मैं आज ये बस इधर ही बंद कर दूं। मुझे लग रहा था पूरा हफ्ता लग जाएगा फॉर मी टू कैच अप ऑन यस्टरडेज मिस्टेक्स, पीएनएल वाइज। लेकिन आज ही हमने तकरीबन सब कुछ कवर अप कर लिया है, तो वी कैन कॉल आर डे ऑफ हेयर। क्योंकि अगर ये इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक भी नहीं आके डिस्काउंट देना चाह रहा और वहीं से कंटिन्यू कर रहा है, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ना। मतलब मैं ऑल टाइम हाइस के लिए तो नहीं खेलूंगा आज। इट्स जस्ट ट्यूसडे। तो देखता हूँ 5 मिनट की जो ये इनएफिशिएंसी, ये इस इनएफिशिएंसी से क्या पता हमें सेल दिखने लगे। एंड नोइंग दैट ES नेवर टुक द हाई लाइक ओवरनाइट हाइस। ES ने अभी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट हिट की है ओपनिंग रेंज गैप की, जस्ट बाय द वे। तो देखते हैं, अगर कुछ सीरियस सेल ऑफ आता है तो उसमें वी कैन पार्टिसिपेट, बट अदर देन दैट आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। ये छोटी सी इनएफिशिएंसी है यहाँ पे। सिल्वर बुलेट तो कंसिडर नहीं करूँगा मैं, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी छोटी है। हेमंत भाई, आपके पास और लोग नहीं है जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं जान पहचान में? चैनल बढ़वाओ यार। रोज हर कोई अनसब्सक्राइब कर रहा है, कोई सब्सक्राइबर नहीं आ रहा जब से मैं वापस आया हूँ। वो लोग किस लेवल पे हैं? या मेरे ख्याल से हमारे पास नए लोग ही आए ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ यार, सब भाग जाते हैं क्योंकि पता है ना कि किस तरीके से आपको कन्फ्रंट करती है आपकी मिस्टेक से और आपकी वीकनेसेस से ये चीज़। तो वो एक्सेप्ट करना स्पेशली पाकिस्तानी मर्द के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये है। और लोगों को लगता है बहुत आसान है ये मैं बोलूँगा सबसे मुश्किल चीज़ है। क्योंकि आप मुसलसल लड़ रहे हो अपने आप से। ठीक है, इट डज गेट बेटर, लेकिन आई डोंट थिंक कि एक पॉइंट से आगे जाके इट डज गेट एनी बेटर देन दैट फॉर ह्यूमन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप इंसान हो, इमोशनल, और इमोशनल रेगुलेशन जो है वो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है इंटेंशनली, वरना चीज़ें जो हैं वो आपको पता है बिखर जाती हैं। चीज़ें बुलिश ही लग रही हैं भाइयों। ईएस भी अब जा रहा है टू टेक ओवरनाइट हाइस। 100% ब्रो, couldn't agree more.
Yes, breaches overnight highs, almost there. Day before yesterday, high भी उधर ही है. So pehla trade was a long loser for $102. Second trade was a long winner for $215. You see. Third trade was a long loser for $166. So fuck, bro. That is not good. Fourth trade was a long winner for $531. So ये जो हुआ है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. Not really happy with it. और इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, that I will close off my day today. क्योंकि ये चीज़ भी मुझे इम्प्लीमेंट करना शुरू करनी है कि जब मैं वो तोड़ूँ, कोई रूल तोड़ूँ, कुछ घबराहट हो, टेक्निकल इशू हो, तो rather than blowing everything, मैं दिन ही बंद कर दूंगा और सोने चले जाऊंगा. क्योंकि अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ ना, तो जब तक जॉब कर रहे हैं इसको जितना स्लोली लेके चल सकते हैं ना, और इसमें आपको पता है स्लोली इज रियली फास्ट टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट इज़ द ओनली वे. और हमारे पास 5 अकाउंट्स हैं यहाँ पे, आगे जाके और इस पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे. तो स्टिकिंग टू डूइंग द राइट थिंग्स. ऑलराइट, थैंक यू अहमद भाई फॉर बीइंग हियर. लाइक डाल देना. बाकी for everyone else, if you trade Nasdaq or ES or use ICT Concepts, I trade here every day at 8:30 a.m. Eastern Standard Time. So do give this stream a like and subscribe the channel. Does appreciate me and encourage me a lot as a new streamer. And until next time, stay safe, trade safely, and see you tomorrow.